So hello everyone, welcome to EduTap. I'm Surbhi and this is Perspective 360 Degree, your one-stop solution for current affairs, descriptive writing and answer writing evaluation. If you're new to this initiative, then let me tell you, on Perspective 360 Degree, we cover important topics appearing in current affairs, which are important not from your objective point of view, but from your phase 2 and especially the descriptive writing portion of your phase 2 examination. If you're sitting for RBI, SEBI or NABARD Grade A examinations, then this initiative is going to be very, very helpful for you since we covered the syllabus of all these three exams and with respect to current affairs. For other exams also, this initiative is going to be helpful, so stay tuned. Before proceeding any further with today's topic, kindly let me know in the chat section if the audio is clear to you and the video is clear. Good evening, Sejal. Could you let me know in the chat section if the audio and video both are clear to you? All right. So I see a lot of you joining here. So welcome all of you. Welcome back to most of you because we have a lot of consistent followers. Many of you have been posting answers since day one. Today we are on, topic number 37 of Perspective 360 Degree. And I see so many out of you have been posting since day one. So, commendable on your part. You're definitely going to see a lot of improvement in your marks and hence in your selection. Finally, for those of you who have not started answer writing yet, I would just say that, to beat any kind of fear or insecurity that you have, the first step should be taking that first step. That should be your only final goal. Don't think much about it. Just start writing answers. Don't worry about the audience is watching or people are watching. I always say that you can, have a dummy ID for posting answers so that nobody knows who's posting. You still get an evaluation for those answers. So don't worry about what other people are thinking. Just start writing today itself. And, so I'll be taking a few comments from here. All right, Shikhar, all the best to you. Snehal, thank you. Thank you, Shubham and Gomati, good evening. So let's begin. Today's topic is Kafral Report, India Finance Report of 2023, Connecting the Last Mile. The theme of the report is Connecting the Last Mile. It has been released by Kafral, which is Center for Advanced Financial Research and Learning. And the topic that we will be covering with the help of this report is not just, discussing the facts of this report. The facts of this report have already been covered by Kritika ma'am in her finance current affairs sessions, which she's taking on our YouTube channel. Kindly go to the live section and check out for the entire details. But with the help of this report, we are covering the topic of non-banking financial company. I'll tell you why we are covering this, because 70 to 80% of this report talks about non-banking financial companies, NBFCs. And a question regarding NBFCs has been asked in phase 2 part of RBI Grade B examination. Hence, this topic is very important for you. First of all, let's look at what Kafral is. About Kafral. Kafral, basically, it's an organization which was created by RBI. It is an independent organization, एक non-profit organization की तरह काम करता है. It was created by RBI back in 2011. And why was it created? As the name indicates, for advanced financial research and learning. All right, so it is independent, but the chairman of this body is governor of RBI himself. तो governor जो RBI के होंगे वही इसके chairman होंगे. And Kafral has decided that on an annual basis, it will release India Finance Report. So this is the first report that Kafral has released, and this report is known as Connecting the Last Mile, means end तक के लोगों तक पहुंचना है. For what? For something related to finance, financial inclusion, and they're covering NBFCs in detail through this report. So that's all about this. जब अगले साल दूसरी report आएगी, then we'll know what are the other topics that have been covered. इस बार के लिए this is the important one. So yes, all newspapers have covered this report in the previous few days. This is from Indian Express, that India Finance Report. India Finance Report, Kafral की report का नाम है. It says that a warning against repeating past mistakes. So what are the past mistakes against which Kafral has given a warning? We'll be covering that. And fintech set to surpass traditional lenders by 2030. Who are your traditional lenders जिनको fintech surpass कर जाएगा? Traditional lenders are not your money lenders. We are talking about banks here. So
first of all, let's look at the relevance of this topic from RBI Grade B perspective. It holds direct relevance in your general finance and management syllabus in 3 topics where it is structure and functions of financial institutions, non-banking system, and developments in digital payments, which have been covered comprehensively in this report. So we'll be covering some data with regards to that. For NABARD Grade A, you have a topic called Development of Banking and Financial Institutions in India in your ESI part of the syllabus. For SEBI Grade A, you have under the heading General Topics for Finance, you have the topic called Financial Inclusion and Use of Technology, again very important when it comes to NBFCs, and Alternate Source of Finance. And NBFCs are your alternate source of finance, so that's your relevance for the syllabus. Now, let me begin by giving you an expected question. Expected question यहाँ से हो सकता है RBI has already asked about NBFCs and importance of NBFCs, तो हो सकता है वो question repeat हो जाए, काफ़ी chances हैं कि नहीं होंगे. Now this report is so important, so the question regarding NBFCs might be asked with respect to this report, so it is going to be a very comprehensive question and थोड़ा सा tough लग सकता है, but stay tuned with me. It's going to be very very simple and you don't have to read the entire report. All the important things have been covered in this in this today's lesson. So the question is, what are non-banking financial companies and what are their broad roles? Briefly highlight the observations with respect to NBFCs as mentioned in the recent India Finance report released by Kafral. Now, if you look at the first part of this question, ये question आपको 600 words में अलग से भी पूछा जा सकता है. So you have to prepare it from the static part. Here we'll be lightly touching on it since we know कि ये हमारा एक question का part बना रहा है. It is making a sub question here. Briefly highlight the observations with respect to NBFCs as mentioned in this report which we are covering today, and the report is of 134 or let's say 136 pages. तो ये report आप नहीं पढ़ सकते, but what are the observations? There is so much data, diagrams, graphs given in the report that you can not learn all of that. So observations ko we'll be dividing in 2 parts. I'll tell you how. In the introduction, we'll explain NBFCs. We'll start by giving a definition. हम basic explanation देंगे कैसे register होते हैं, क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है. Role of NBFCs, broad role in 4 points will be given in the body part 1. और इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा concise रखने वाले हैं. All the parts will be very very concise since the question has at least 3 parts that we can see. The first part is this, then observations. Observations भी आपकी 2 parts में आएंगी. So everything is going to be very concise. Then observations of India Finance report with respect to NBFCs. बाकी observations नहीं बतानी है. Then this is body part 3. Concerns highlighted in India Finance report. This has to be ये भी observations के अंडर ही आपका आता है कि क्या concerns है, जो हमने पीछे headline भी देखी है, that warning against repeating past mistakes. So this is the warning part here, and then in the conclusion we'll end with a way forward. First of all, let's begin with an introduction. Introduction से पहले this is not a part of your answer. This is a director's note and यहाँ पे काफरल के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है for the objective part of your syllabus. Independent body of RBI, non-profit organization. Governor of RBI is the chairman and director is Bibu Prasad Kanungo. And first annual flagship है of काफरल India Finance report. इससे पहले इसकी कोई भी report इस नाम से नहीं आई है. And the theme you have to remember, connecting the last mile. So now coming to NBFCs, talking about non-banking financial institutions. ये आपके लिए है, you can refer to this later. I won't explain the structure and functioning of NBFCs here. I will be telling you what are NBFCs. तो एक basic सी story से शुरू करते हैं. Let's begin with the basic explanation. Money is important. Money is important to run your life. Money is important to run your family, to run a business, or to run the country, or to run the world. It's most of the things are about money. It's all about money, right? So if you have to grow your money, what you will do? Probably you will come up with an idea. आप एक idea लेकर आते हैं that you can start a, let's say, coaching center and provide coaching for RBI Grade B examination. But to start that coaching center, again you need seed capital. आपको initial money की ज़रूरत है. Where do you get that money from? To start a business. And you know that, let's say, if you get X rupees today, you can multiply it by, let's say, 10 times if you start a coaching center. कि आप अगले 5 साल में इन x रुपीज़ को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू गेट x रुपीज़ टुडे, वो कोचिंग सेंटर स्टार्ट करके. बट हु विल गिव यू x रुपीज़? दीज आर प्रॉबली लैक्स ऑफ रुपीज़
ऑल राइट, सो आइदर यू आस्क योर फैमिली, आइदर यू आस्क योर फ्रेंड, या तो आपके पास अपनी सेविंग्स हो, बिकॉज रिस्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग अ बिजनेस. इट माइट नॉट वर्क, इट माइट वर्क वेरी वेरी ब्यूटिफुली. नाउ वेयर डज दैट मनी कम फ्रॉम? अगर आपके पास खुद की सेविंग्स नहीं है, योर फैमिली इज नॉट सपोर्टिव, या योर फैमिली डजंट हैव द सेविंग्स और दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू द मनी, व्हाट यू डू इज you go to banks. And what do you ask from banks? You ask money from banks, and they give you money at a good interest rate. काफ़ी ज़्यादा high interest rate पर आपको वो लोन देते हैं. And that's how, you know, taking that loan, you can run your business, feel anxious all the time about returning that loan and paying the interest, and then you know, मल्टीप्लाई योर मनी एंड देन रिटर्न द लोन बैक इफ यू वांट टू. और ये जो आप मनी मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल मेक एक्स रुपीज़ का आप 10 टाइम्स कर देंगे, 10x रुपीज़ कर देंगे, दैट्स लाइक करोड्स ऑफ रुपीज़ यू विल बी हैविंग. यू विल बी एम्प्लॉइंग पीपल, आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेंगे. यू विल बी एम्प्लॉइंग पीपल, दैट मीन्स यू विल बी हेल्पिंग देम रन देयर लाइवलीहुड्स. यू विल बी हेल्पिंग द इकोनॉमी, क्योंकि आप जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मनी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. एंड a sector is growing because of you, the education sector is growing because of you. But let's say banks भी बहुत ज़्यादा stress में और banks आपको लोन ले देने के लिए तैयार नहीं है, then there are other financial institutions and one of them are NBFCs. These are non-banking financial companies. ये आपको लोन तो देते हैं, बट ये बैंक्स की तरह काम नहीं करते. इन बैंक्स इफ यू गो, यू हैव टू प्रोवाइड देम विद अ कोलैटरल ऑल्सो. आपको शो करना पड़ता है दैट यू हैव द कैपेसिटी टू रिटर्न अ लोन बैक. बट विद एनबीएफसीज बहुत तरीके के होते हैं. एनबीएफसीज उतनी ज़्यादा रेगुलेटेड भी नहीं है, उनको आरबीआई को इतनी जवाबदेही नहीं होती है जितनी बैंक्स की होती है. एंड दैट्स वाई एनबीएफसीज कैन ईजिली गिव आउट लोन्स. कई बार यू नो, इंटरेस्ट रेट्स आर एट पार विद बैंक्स ओनली, या कई बार उनसे कम भी होता है. सो इट हैज़ बीन सीन आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जहाँ पे बैंक्स बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में आ गए थे. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स हैव बीन इंक्रीजिंग. वहाँ पे वी हैव सीन दैट देयर इज अ शैडो बैंकिंग सेक्टर, जिसे हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वाला जो सेक्टर है, दैट हैज कम अप एंड पीपल आर रिजॉर्टिंग टू एनबीएफसीज टू टेक लोन्स और टू टेक क्रेडिट. तो अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो रहा है, पीपल आर गेटिंग लोन्स फ्रॉम लाइक लेट्स से फॉर्मल सोर्स, एनबीएफसी फॉर्मल सोर्स में आते हैं, तो हम इन पे फोकस करते हैं ना. And this is exactly what the Kafral report has done. NBFCs have been focused on. RBI ने भी काफ़ी फोकस किया है, रेगुलेशन भी इम्प्रूव किया है. And I'll tell you what are the functions of NBFCs, इनको रजिस्टर कैसे किया जाता है. And we'll see कि काफराल की रिपोर्ट ने, इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट ने, what have they told us about NBFCs और ये क्यों इतने अच्छे हैं. So first of all, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नाम में ही कंपनीज आ रहा है, so they are registered under the Companies Act only. And I'm like deleting all this. Okay, so just give me, okay. So non-banking financial company is a registered entity under the Companies Act 1956. ये RBI की वेबसाइट पर डेफिनेशन है, so this is very very important. And NBFCs का क्या होता है, दे कैन स्पेशलाइज इन एक्टिविटीज सच एज लेंडिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, लीजिंग एंड इंश्योरेंस. तो बैंक जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वही NBFCs भी परफॉर्म करते हैं, बट देयर आर अ सर्टेन सेट ऑफ डिफरेंसेस विच विल बी सीइंग. एंड प्राइमरी ऑपरेशंस जो होते हैं बैंक्स के, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, गुड्स ट्रेडिंग और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, वो NBFCs नहीं करते. दिस इज अगेन इन ब्रैकेट्स, यू कैन एक्सक्लूड दिस. दिस NBFCs आर नोन एज शैडो बैंक्स, क्योंकि बैंकिंग की तरह ही काम करते हैं. And they are an important link in financial intermediation continuum, especially appearing after global financial crisis of 2008. उसके बाद जो इनका रोल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. The point here is, बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स आपको जब लोन देते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे, उनके पास वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, where do banks get their money from? They get their money from us only, because we are having bank accounts, we deposit our money, households deposit their money in the banks. तो हमें जब when we deposit money in the banks, we get lesser rate of interest, और higher interest rate पर banks loans देते हैं. तो वो जो difference होता है, that is where they get their money from. But in other case, NBFCs दो टाइप्स के होते हैं, डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग. जो डिपॉजिट टेकिंग होते हैं, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बट नॉट डिमांड डिपॉजिट. ऐसा नहीं है आप अपने अकाउंट से कभी भी पैसे निकलवा लेंगे, ठीक है. तो लॉन्ग रन के लिए ही आपको एक NBFC को पैसे देने होंगे. एंड दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम.
एंड दे कैन नॉट ऑल्सो इशू चेक्स. चेक्स भी आपके एक तरह से डिमांड डिपॉजिट डिमांड की बेसिस पर आपको एज द डिमांड इज जनरेटेड इन द चेक आपको पैसे वापस करने होंगे. सो दैट इज नॉट अलाउड इन NBFCs. ऑल्सो जो भी डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं, योर क्रेडिट इज नॉट सिक्योर्ड विद देम. तो अगर एक NBFC में NPA क्राइसिस आ जाता है या NBFCs फेल हो जाते हैं, देन DICGC विच एक्चुअली सिक्योर्स योर मनी इन अ कमर्शियल बैंक. मान लीजिए आपके पैसे SBI में हैं तो अप टू 5 लाख रुपीज़, मान लीजिए लेट्स से यू हैव 10 लाख रुपीज एंड वन ऑफ द बैंक फेल्स जहाँ पे आपके पैसे हैं, सो अप टू 5 लाख रुपीज आर इंश्योर्ड. दैट मीन्स यू विल गेट एटलीस्ट 5 लाख रुपीज बैक आउट ऑफ हाउ मच एवर मनी यू हैव डिपॉजिटेड विद द बैंक. बट दैट इज नॉट द केस विद NBFCs इवन इफ दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ NBFCs. राइट दिस इन योर इंट्रोडक्शन. नाउ वील मूव ऑन टू द लेट्स डेल्व डीपर सेक्शन जहाँ पे हम लोग बॉडी पार्ट 1 दैट इज रोल ऑफ NBFCs वी विल बी स्टडिंग. बिफोर दैट इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली लेट मी नो in the chat section. It is a subsidiary of RBI. Muskan, you cannot say that it is a subsidiary of RBI. These are financial institutions of one type. तो इनके बहुत सारे रोल्स होते हैं. NBFCs के क्या रोल हो सकते हैं? आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे प्रोवाइड करती है, इफ इट इज प्रोवाइडिंग मनी और लोन्स इन द मार्केट, व्हाट कैन बी द रोल दैट यू कैन से. तो हो सकता है वो क्रेडिट ऐसे लोगों को प्रोवाइड कर रही हो वेयर बैंक्स आर नॉट अवेलेबल. सो अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स कैन बी टारगेटेड बाय NBFCs. प्लस दे डू नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और द रेगुलेशन एज ऑफ अ बैंक. अगर आपने लेट्स से HDFC की ब्रांच एस्टैब्लिश करनी है किसी रूरल एरिया में, सो दैट बैंक हैज टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, अ प्रॉपर बिल्डिंग. देयर हैव टू बी ऑफिसर्स placed जिनकी timely transfers, promotions, everything is happening. NBFCs, they are many a times private entities, most of the times private entities होती हैं. Many a times they work online. ठीक है, फिनटेक की मदद से वो लोग ऑनलाइन काम करते हैं. दे हैव जस्ट वन ऑफिस एंड वो पेनिट्रेशन डिजिटल मेथड्स की वजह से ज़्यादा इंक्रीज कर पा रहे हैं. ऑलराइट, तो इतना रेगुलेशन नहीं होता, सो वेयर बैंक्स कैन नॉट रीच, योर NBFCs कैन रीच. प्लस लेट्स से इन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस योर बैंकिंग सेक्टर फेल, तो वहाँ पे क्या है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कैसे एश्योर कर सकते हैं हम मार्केट में विद द हेल्प ऑफ NBFCs. जहाँ पे बैंक्स फेल हो रहे हैं वहाँ पे NBFCs कैन कम टू द रेस्क्यू. तो ऐसे ही 3-4 पॉइंट्स है विच विल बी राइटिंग डाउन इन द रोल. द फर्स्ट वन इज इन्फ्यूजिंग डाइवर्सिटी एंड कॉम्पिटिशन अमंग क्रेडिट प्रोवाइडर्स. अब नाउ लोन यू गेट एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है. सो लेट्स से वन NBFC इज देयर इन योर एरिया एंड वन बैंक इज देयर. तो आप लोन वहाँ से लेंगे जहाँ से आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव टू पे दैट मनी. तो इससे कंपटीशन भी आता है एंड डाइवर्सिटी भी आती है अमंग क्रेडिट प्रोवाइडर्स, यानी कि बैंक्स, NBFCs एंड अदर सच इंस्टीट्यूशंस. ऑल्सो दे कैन नॉन बैंक लेंडिंग कैन ऑल्सो एक्सपैंड वाइल बैंक लेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सच एज ड्यूरिंग मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग साइकिल्स. जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन होती है तो NBFCs कैन कम टू द रेस्क्यू देयर. फिनेंशियल इंक्लूजन को फॉर्मलाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ NBFCs. मोर एंड मोर पीपल who were actually going to money lenders beforehand, now because of lower interest rates of loans with NBFCs and less strict norms, they can actually get into the formal financial inclusion setup. Underserved segments हैं and geographically far-flung regions हैं. And the third one is innovating financial products and unconventional delivery mechanisms. यहाँ पे आपका digital lending का digital lending has been very prominent here. It has been seen that NBFCs ने जितनी भी lending करी है around 60.53%, that is around 61% of lending was in the digital mode. और banks ने कितना digital lending किया है, digital loans कितने provide किए banks ने, just 5.53%. So that is a humongous difference. तो digital lending या digital loans लेना कितना ज़्यादा आसान है as compared to going to a bank and completing all those documents and everything. Yes, there are risks involved, but still NBFCs हमें digital India, digital inclusion और formal financial inclusion में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. एंड इफ आई टेल यू 2016 में जो डिजिटल पेनिट्रेशन है फॉर लाइक से बैंक्स का 0.33% था एंड NBFCs का 0.53 था. NBFCs हैव taken this 0.53 to 60.53. तो देखिए कितना ज़्यादा improvement है. Then it can NBFCs can enhance the resilience of financial system, जैसे कि during COVID-19 pandemic, if your banks are not functional during a global financial crisis, by filling in gaps in intermediation. तो वो credit के जो shocks हैं उनको absorb कर लेते हैं. Now these were light roles. हम ये जो part है this is going to be very very light and short.
Now we are moving to the actual part, that is observations of India Finance Report and concerns which have been highlighted by India Finance Report. I hope you have some amount of clarity regarding non-banking financial companies till here, और आपको थोड़ा बहुत रोल समझ में आने लगा है कि ये क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं. These are the companies that provide credit and these are non-banking, मतलब ये banks नहीं होते. Alright, if you have any doubt, kindly let me know in the chat section. Yes, Muskan, that is right. Yes, Sibananda is asking what is the source of credit for NBFCs, और यहीं पे हमारा जो next part है that is focused on. अगर NBFCs, they are of two types, deposit taking and non-deposit taking. I understand कि अगर वो deposits ले रहे हैं and those deposits are locked for 5 years, तो NBFCs के पास पैसा आ गया मार्केट में घुमाने के लिए in the form of loans. But if NBFCs are of the type of non-deposit taking, let's say I am an NBFC and I say that I will give you loan at a very low interest rate. So take loan from me, give me the interest rate and pay me back my money after a few years. So the question is, where am I getting that money from? या तो मेरे पास अपनी personal money हो या मेरी savings हो, but where do I get that money from to give loan to let's say 100 people, which will go to like let's say crores of rupees. So where do I get that money from? तो ये question है. So the thing is that I take a loan from a bank, ठीक है, I give my security, I show my collateral to the bank कि मेरी कंपनी है या मेरे पास collateral है. I take loan from a bank at a low interest rate and then I float it in the market at a high interest rate. मैं जो लोन है हाई इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में फ्लोट कर दूंगी. नाउ हाउ डज इट हेल्प? लेट्स से कोई फैमिली है, एक्स फैमिली, there are 4 members in the family and all 4 people have loan on them, तो उनको 5th loan मिलने के chances कम हो जाते हैं. But let's say one of the person wants to establish a school, run that school and multiply the money, so that person deserves that loan. Okay, तो वो बैंक के पास नहीं जा पाते या बैंक्स उनको कई बार लोन नहीं देते. So NBFCs are the way to go. थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट हो जाता है बट एटलीस्ट दैट पर्सन विल बी एबल टू अवेल क्रेडिट एट दैट मोमेंट. सो NBFCs इट हैज़ बीन सीन दे टेक मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. ठीक है, या तो वो डिपॉजिट्स लेते हैं एंड मेनी ऑफ द टाइम्स, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है, वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द NBFCs आर नॉट गेटिंग मनी फ्रॉम अदर सोर्सेज. किसी अच्छे लेट्स से वर्चुअल साइकिल से वो पैसे सिक्योर नहीं कर रहे जैसे वो लोन में बांट रहे हैं. वेयर आर दे गेटिंग देयर मनी फ्रॉम? दे आर गेटिंग इट फ्रॉम बैंक्स ओनली. सो अल्टीमेटली it's the same money that is floating in the market. और अगर banks fail होते हैं तो NBFCs भी fail हो सकते हैं. That is the concern which your report has highlighted. And first of all पहले हम observations देख लेते हैं. 3-4 observations है which are good with respect to NBFCs. If you remember around 2016 के आसपास एक crisis हुआ था, not 2016, around 2017-18, IL and FS crisis. एक NBFC था बहुत बड़ा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि फेल हो गया था. उसके NPS बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. दैट मीन्स पीपल हैड टेकन लोन फ्रॉम इट बट हैड नॉट रिटर्न्ड इट ऑन टाइम. सो 91,000 crores दैट वाज द लाइबिलिटी एंड दैट कंपनी फेल्ड. तो वो 91,000 crores कहाँ से आता है? it goes from the taxpayers pocket only in the long run. So Kafral की report ने क्या बोला है? There are 3 things which Kafral's report has highlighted and these 3 things are talking very good about non-banking financial companies. उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं. Capital position strong हो गया NBFCs का. That means the capital or the money that they hold with them, कि उनके पास, let's say I'm an NBFC, तो मेरे पास कितने पैसे हैं loans में disburse करने के लिए, how much capital I have, plus how much loans, let's say how much risk I have had, कि मेरे पास अच्छी चीज़ कितनी है, मेरे पास अपनी सिक्योरिटी कितनी है एज कम्पेयर टू व्हाट इज़ द रिस्क दैट आई एम प्लेइंग विद. वो जो है वो कैपिटल वाला जो काम है वो बढ़ गया है. लेट्स से हियर इट वाज 21.5% इन 2017, इन 2022 इट्स 27.6%. तो कैपिटल पोजीशन ऑफ NBFC सेक्टर, जिसको CRAR के कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स के टर्म्स में मेजर किया गया है, दैट हैज़ इंक्रीज विद टाइम. द सेकेंड वन इज इनहांस्ड असेट क्वालिटी. असेट क्या होता है? असेट क्या हुआ मेरे लिए? इफ आई हैव गिवन मनी टू यू एंड यू आर लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड यू आर रिटर्निंग दैट लोन टू मी इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, तो वो मेरे लिए एसेट हुआ. आई एम एन NBFC हियर. सो
एसेट क्वालिटी हैज इंक्रीज, दैट मीन्स एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे लोग जो मुझे पैसे वापस ही नहीं कर रहे थे, दैट हैज गॉन डाउन. लुक एट 2015, इट वाज लेट्स से 2015 देखिए, उसके बाद आपके एनपीएस बढ़े हैं. 2018 में अगर बात की जाए, सिंस 2018 योर एनपीएस हैव बीन डिक्रीजिंग फ्रॉम 6.1% टू 4.4%. और आपका जो एनएनपीए, नेट एनपीएस, दे हैव ऑल्सो ऑलमोस्ट स्टेड द सेम. तो ये जो चीज़ है कि एनपीएस डिक्रीज हो रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. एंड थर्ड वन विच दे हैव हाईलाइटेड इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. क्या ये आपको फिगर्स याद करने हैं, ग्राफ्स याद करने हैं? नॉट एट ऑल, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी कि वाई इज समथिंग इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट? Probably more and more people are depending on NBFCs to take loans and to run their businesses or to multiply their money. So the first one is stronger capital position. कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो, ऐसे लोन्स जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, कैपिटल अपॉन रिस्की एसेट्स. रिस्की एसेट्स क्या हो गए? ऐसे लोन्स जो कि शायद वापस नहीं आ रहे हैं. सो कैपिटल अगर बढ़ गया है तो ये रेशो बढ़ जाएगा. सो प्रीवियसली दिस रेशो वाज 22.9%, अब क्या है 27.6%. दैट मीन्स कैपिटल ऑफ एनबीएफसीज इज इंक्रीजिंग, विच इज अ गुड थिंग, एंड इट शोज इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. कि ऐसा नहीं है एनबीएफसीज विल रन आउट ऑफ मनी एंड देन दे विल बी लुकिंग फॉर पीपल टू रिटर्न देयर लोन्स बैक एंड देन दे विल बी कम्युनिकेटिंग टू द गवर्नमेंट दैट वी हैव फेल्ड, वी कांट ऑपरेट एनी फर्दर. तो आप देख लो कैसे करना है. Then second is enhanced asset quality. Both gross and net performing and net non-performing assets, they have consistently decreased, which is indicating healthier loan portfolios. Means loans वापस आ रहे हैं, people are paying their interest on time, people are returning the loans on time. That means people are able to multiply the money, all right, or at least return the money without causing chaos in the system. The third one is economic importance. Economic importance because many loans have been provided in rural areas, so we can see कि अगर हमें financial inclusion provide करना है, we can actually rely on NBFCs, या इनका presence हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. Also, I told you that 61% of the loans that have been given by NBFCs were in the digital mode. तो again फिर से आपका वही चीज़ आ जाती है, अंडर सर्व्ड एरियाज एंड रूरल एरियाज में, या डिजिटल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए, नॉट डिजिटल इंक्लूजन बट फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए एनबीएफसीज आर योर वे टू गो. सो एमएसएमईज, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस का जो एनबीएफसीज का जो रोल है एमएसएमईज पर, दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट दैट येस एमएसएमईज आर बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम एनबीएफसीज, क्योंकि यहाँ से इनको लोन्स आसानी से मिल जाते हैं. देन ऑल्सो रिटेल लेंडिंग बाय एनबीएफसीज, जो कि रोजमर्रा के लोन्स होते हैं, it has grown by nearly 223.2% by leveraging technology, digital inclusion की मदद से. रूरल क्रेडिट जो है, इट हैज़ मेड अप टू 20.8% ऑफ जो लोन्स हैं एनबीएफसीज के, दे हैव बीन टू पीपल इन रूरल एरियाज. बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, 20.8%, नॉट वेरी इंप्रेसिव, बट एटलीस्ट आपको पूरे के पूरे बैंक्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा. एंड एनबीएफसीज का पेनिट्रेशन अगर बढ़ाते हैं, देन योर अर्बन रूरल डिवाइड इन एक्सेस टू क्रेडिट दैट कैन बी ब्रॉट डाउन. एनबीएफसीज कैन पोटेंशियली नैरो दिस गैप. तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस है विच काफराल हैज मेड. आई हैव एडेड ऑल द रेलिवेंट डेटा फ्रॉम द 134 पेज रिपोर्ट. तो आपको रिपोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज द ओनली डेटा दैट यू हैव टू कोट इन योर आंसर. देन कंसर्न्स विच हैव बीन हाईलाइटेड इन इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट. एक तो कंसर्न की हमने बात कर ली है विच केम फ्रॉम सिबनंदा's क्वेश्चन, वेयर डू दे गेट देयर मनी फ्रॉम, एंड काफराल हैज सीन कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी, आरबीआई हैज़ ऑल्सो हाईलाइटेड इन द पास्ट कि मोस्ट ऑफ द मनी विद एनबीएफसीज इट इज़ कमिंग फ्रॉम बैंक्स ओनली. सो दैट्स नॉट अ गुड सिचुएशन. उनको और भी जगह लेट्स से इन्वेस्ट करना चाहिए. लेट्स से दे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, वहाँ से वो पैसे कमाते हैं एंड देन दे डिस्बर्स देम एज लोन्स. तो दे शुड बी देर शुड बी डाइवर्सिटी इन देयर ओन अर्निंग कैपेसिटी या अर्निंग वेंचर्स की, उनके पास भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए. दे शुड नॉट रिलाई ऑन बैंकिंग सेक्टर ओनली, बिकॉज वी डू नॉट वांट दैट एनबीएफसीज और शैडो बैंकिंग सेक्टर शुड फंक्शन एज अ सब्सिडरी ऑफ बैंकिंग सेक्टर, कि वो बैंकिंग सेक्टर पर ही डिपेंड कर रहा है. दैट शुड नॉट हैपन. So the first one here is rising bank finance for financing for NBFCs. ऐसे में क्या होता है, both of them are in problem.
द सेकेंड वन इज सिस्टमिक कॉन्टेजियन रिस्क, कि अगर बैंकिंग सेक्टर फेल हुआ देन एनबीएफसीज विल ऑल्सो फेल. ऑन द अदर हैंड इफ एनबीएफसीज आर फेलिंग देन द बैंकिंग सेक्टर विल ऑल्सो फेल, क्योंकि बैंक्स ने किसको लोन्स दिया है, एनबीएफसीज को. इफ एनबीएफसीज आर फेलिंग दे विल नॉट बी एबल टू रीपे देयर लोन्स टू बैंक्स. तो एनबीएफसीज का एनपीए देन बैंक्स का एनपीए, योर एंटायर सिस्टम कोलैप्सेस. तो ये सिस्टमिक कॉन्टेजियन रिस्क हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट में. द थर्ड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी शॉक्स, ये हम समझेंगे. दिस इज अ वेरी अमेजिंग पॉइंट हियर. Then warnings about illicit lending apps and fintech impact. Do you get calls and messages that your loan has been approved of let's say 10 lakh rupees, 1 lakh rupees? कितने लोगों को आते हैं ये messages और calls या emails आते हैं? So yes, these are all coming from NBFCs, और ये illicit lending apps भी हो सकती हैं. that avail loan in 1 minute, avail loan in 5 minutes. अगर आपने उनका सोर्स चेक नहीं किया है then they can be illegal apps also, जो कि सिर्फ आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हैं. Alright, so that is a concern that has been highlighted. So first of all, rising bank financing for NBFCs. इसके दो पार्ट्स हैं. Let's say this is your bank and this is your NBFCs. अब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. बैंक्स आर गिविंग लोन्स टू एनबीएफसीज, एनबीएफसीज आर फ्लोटिंग इट फर्दर. तो वन वे डिपेंडेंस, बैंक्स वांट देयर मनी बैक, सो बैंक्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनबीएफसीज एंड एनबीएफसीज डिपेंड ऑन बैंक. तो ये दोनों हमने फंक्शंस यहाँ पर स्टडी किए हैं. दोनों का जो इम्पैक्ट हो सकता है दैट हैज़ बीन स्टडीड हियर. सो it could potentially impact the stability of banking sector if NBFCs are not returning their loans. और ये हमने कब देखा था? In 2018, IL&FS एंड DHFL कोलैप्स, ये दो NBFCs थे जो कोलैप्स हो गए थे. आई टोल्ड यू 91,000 करोड़ रुपीस इतने का नुकसान हुआ था, इतने के NPAs इकट्ठे हो गए थे विद IL&FS. तो वेयर वॉज दैट मनी कमिंग फ्रॉम? उन्होंने मैक्सिमम लोन्स अपने बैंक से ही ले रखे थे, which turned into NPAs further. तो एक तो आपका NBFC फेल हुआ, सेकेंड आपके बैंक्स ने सफ़र किया. देन सेकेंड थिंग इज द बिगर NBFCs क्या करते हैं, जो छोटे NBFC, लेट्स से आई स्टार्ट एन NBFC ऑन माई ओन, तो मुझे बैंक लोन नहीं देगा मोस्टली टू फ्लोट इट इन द मार्केट. बट देर मस्ट बी सम बिगर NBFC, लेट्स से दैट इज रन बाय लेट्स से 5 people एंड नॉट एन इंडिविजुअल लाइक मी अलोन. तो उनके पास हो सकता है क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो वो मुझे लोन दे देती हैं. बिगर NBFCs दे गिव लोन टू स्मॉलर NBFCs. तो अगर let's say banking system fails, so smaller NBFCs which are actually run by one individual and probably run in rural areas or supporting MSMEs या supporting let's say very small industries या very underserved sections of population, तो impact अगर मुझ पे आएगा that I have no money to give to the people to start their MSME on time, तो वो किस वजह से आ रहा है? Because bank has failed, then NBFC has failed, and then small NBFCs like me and hence underserved people are suffering. So bigger NBFCs borrow from banks and in turn lend to smaller NBFCs to exploit this regulatory arbitrage. Due to this increasing interconnectedness, any risk that emanates in the banking sector can impact NBFCs directly. And relatively smaller या seemingly systematically unimportant firms, they can have higher systemic implications, जिसकी बात की गई है systemic contagion risk में. That means the entire, if one NBFC faces a crisis, it might trigger a chain reaction of financial problems across the entire sector. Then the third one is monetary policy shocks. Now you know RBI follows many monetary policy practices. या तो inflationary होता है या contractionary होता है. कभी कभी interest rates, repo rate बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, not बहुत ज़्यादा, but at least repo rate is increased, sometimes it is decreased. तो banks भी उसी हिसाब से lending करते हैं. And when let's say banks have high rates of interest on loans, as of now banks के interest rates काफ़ी high चल रहे हैं, so NBFCs will not go to banks to take loans from them. So what they will do, NBFCs क्या करेंगे, वो जो काफ़ी highly risky areas होते हैं वो वहाँ पर invest करते हैं, so that they can earn very मनी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि उनको फिर बैंक से लोन नहीं मिल रहे. तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो शॉक्स होते हैं ये NBFCs को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. सो टू मेंटेन देयर मार्जिन्स दे टेंड टू शिफ्ट देयर लेंडिंग टू रिस्कियर सेगमेंट्स as unsecured loans, subprime borrowers, etc. They also increase their exposure to capital markets by investing in equities and mutual funds. ठीक है, या तो वो अपने पैसे ऐसी जगह डाल देते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और दे गिव लोन्स टू पीपल who might not return the loan back. ठीक है. Then there are about warnings about illicit lending apps and fintech impact. तो ये fake illegal digital lending apps की यहाँ पर बात की गई है, which compromise with consumer safety and privacy, although some data may be genuinely necessary. So fintech की अगर हम बात करें, there are
1100 lending apps available in the Indian Android user across 80 app stores. तो 1100 lending apps are available और ये सारी की सारी genuine नहीं होने वाली. So that is a concern which has been highlighted very comprehensively in this report. तो ये कुछ genuine concerns हैं, कुछ observations हैं. I think these amount to 7 in number. आप 1 to 7 भी लिख सकते हैं या आप 2 parts में divide भी कर सकते हैं. Now moving on to the conclusion part of it या way forward part of it. First of all, coordination between banking sector and NBFCs is required. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. The lower interest rates of banks and NBFCs का penetration, इन दोनों में जब cooperation कराई जाए, only then you can reach the underserved segments. This has been understood by the report. And थोड़ी सी आपने तारीफ करनी है NBFCs की, that they have emerged as agents of formalizing finance in India by facilitating again financial inclusion, innovative financial products लाए हैं, novel delivery mechanisms लाए हैं through the use of mobile phones and all. And COVID-19 pandemic के बाद से या उस टाइम से इन्होंने बहुत ही अच्छे से शॉक को absorb किया है. They have provided people with timely credit. So now increased integration with banking sector in post pandemic period, इसको हमने check करने की ज़रूरत है. Close monitoring is required here, and to adopt a balance between supporting growth and product innovation, mitigating risk, that is very much required. And they should not be seen, banks और NBFCs को आपस में competition में नहीं देखा जाना चाहिए. This is what the report is saying. They should be seen as complementary to banks. तो अगर ज़्यादा coordination होगा, probably जो NPA का problem NBFCs banks दोनों में होता है, वो दोनों मिलके address कर सकते हैं. And here I'm giving you one point which you don't have to write in the conclusion, but RBI का एक scheme है co-lending model. In co-lending model they use कि banks और NBFCs इकट्ठे काम करते हैं, जहाँ पर low cost of fund आता है बैंक से, like lesser interest rate वाला loan is coming from the bank, but the loan is provided by NBFCs because NBFCs have greater reach. तो priority sectors में co-lending model RBI has been using. So this is something that you can quote in your answers. Now I'm displaying the question again. This has been a very long discussion today, but reports थोड़ी सी जब आती हैं वो थोड़ी tough होती हैं समझनी. And to write an answer again, RBI में पिछली बार 2 questions आए हैं report से. So I highly urge you that you write the answer to this question. The PDF would be available tomorrow morning on our Telegram channel. Kindly go through the content and let us know in the comment section how is this series helping you. Post your answers for free evaluation in the next 48 hours. That means by Friday 5 p.m. Friday 5 p.m. I will see you again with another topic highly relevant for your exam point of exam. Till then, post your answers to this question. Get that evaluated free of cost. And I understood one comment, एक बहुत ही अच्छा comment आया है in the live chat, that the evaluation is very, very comprehensive that you are getting, and this initiative is free of cost, so kindly benefit out of it. And thank you for all the nice comments and feedback that you have been sending to us. We hope you success and good luck for your preparation journey. Take care. This is our email ID in case you have a feedback or you want to reach out to us, and this is our phone number 8146207241. Kindly subscribe to the YouTube channel if you haven't done it yet. Many students have cracked many great examinations by just using free resources on our YouTube channel, and you can do that too. For any paid courses, you can contact us at this number. I will see you on Friday at 5 p.m. Till here, if you have any doubts, kindly let me know in the chat section. Otherwise, we'll call this a day. Vandita, they don't. As of now, citizens don't trust NBFCs fully. They mostly trust banks. Yes, Vandita, that can be done. You can write such examples. Hello, Rohit. Danish, I hope the things went at the right pace for you. All right. So thank you, all of you. You've been a wonderful audience. I'll see you on Friday, 5 p.m. Take care and all the very best.